Hello and welcome, and in this video you will learn why you should remove very from your English and how you can remove it, and I'll show you some examples in which you can remove very and it will have the same meaning. See, हम very क्यों use करते हैं? Basically जो हम कहना चाहते हैं उसको अगर हमें ज़्यादा इंटेंस तरीके से कहना हो तो हम very यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में तो आपकी राइटिंग बहुत एवरेज लगती है। बहुत आप कभी भी नोटिस करेंगे जो बहुत कुछ आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी जो राइटिंग होती है उसमें वेरी वर्ड का यूज़ बहुत कम होता है। स्पीकिंग में भी अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इट डजंट साउंड गुड। इंस्टेड आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। इसको रिप्लेस कैसे करें ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि अगर आपको ये कहना हो कि आई एम वेरी हंग्री तो आप कह सकते हैं आई एम स्टार्विंग। यू कैन सी कि आपकी जो इंग्लिश का लेवल है एकदम इंक्रीज हो गया है। आपकी जो स्पीकिंग है आप इसको लिखोगे तो आपकी राइटिंग एकदम इम्प्रूव हो जाती है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है वेरी एंग्री मीन्स फ्यूरियस। आप वेरी एंग्री की जगह पे फ्यूरियस यूज़ कर सकते हैं। आई एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हर फोन इन द पूल दैट मेड हर वेरी एंग्री की जगह पे यू कैन से मेड हर फ्यूरियस। वेरी ब्यूटिफुल यू कैन से एक्सक्विजिट और गॉर्जियस। लुक एट दिस एक्सक्विजिट पेंटिंग, द ब्राइड लुक गॉर्जियस। वेरी कोल्ड फ्रीजिंग, इट्स very cold in here, you can say it's freezing in here. Can I close the window? Very large, colossal, तो बहुत बड़ा कोई है वो, big amount of money, तो आप कह सकते हैं they were asking a colossal amount of money for the house. Very small is tiny, just trim a tiny bit of my hair please. Very happy you can say jubilant or thrilled. The fans were jubilant at their team's victory. I was thrilled that so many people turned up to the party. Very tired, exhausted. I worked all day, now I'm exhausted. Or she worked all day, now she's exhausted. Very clean, spotless. Her home is spotless. This table is spotless. Very clear, obvious. It's obvious that she doesn't like you. It's very clear that she doesn't like you. So it's obvious. There is no obvious solution. Very fat is obese. So she was not just overweight, she was clinically obese. Very important, crucial. This was a crucial decision. This was a very important decision. This year is gonna be a crucial year for me, a very important year for me. Very loud, deafening. The music was deafening. Okay, so when you wanna say the music was very loud, it's the music was deafening. ऐसे इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट एंड यूज दिस वर्ड्स. इट विल रियली improve your speaking and writing skills. It will make it more effective. Eventually meaning will be the same, but it will become more impressive and more effective. Alright. So I hope you liked the video. Subscribe to the channel. See you in the next video. Take care. God bless you.